Am I audible to everyone? Palak, could you confirm if I'm audible? Okay. ठीक है, we'll wait for more people to log in. ठीक है, then we'll formally start it. Thank you. Yes, ma'am, you're audible. Okay, thank you.
Yeah, thank you for the patiently waiting, everyone. A couple of more minutes. We just want the maximum people to log in, so we start with everyone. Like people who join a little late, they don't get a hang of it so clearly. Okay. Hello. Okay. So the UIBS team, we welcome you all to this webinar on preparation and guidance, especially for the Ram Manohar Lohia Hospital Clinical Psychology MPhil entrance. Okay. So a lot of new people also have joined us. We have a couple of handful of regular students. Otherwise, a lot of new people also there. Okay, so assuming all of you are here, postmasters or somewhere in your final year, somewhere, they're just at the, place where you need to decide what to do ahead, how to do ahead, a lot of questions in your mind. Even if you're preparing, a lot of things go in your mind. सही कर रहे हैं, सही preparation हो रही है, नहीं हो रही है. So that's why we have kept this session so that you can directly ask our students who have cleared these entrances the way they prepared, any typical things you want to ask them, you can go ahead and ask. Okay. Fine, everyone. Any question? Any doubts? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? Okay.
No, ma'am. You should continue. Thank you. Okay, okay. ठीक है. Is Kripa already there online with us? Yeah, hi, good afternoon, Trisha ma'am, I'm here. Yeah, good afternoon, Kripa. So, yeah, thanks. I'll just get back to you, Kripa. I just wanted to confirm. I think Deepak is also there, and Okay. Nandini will join in 10 minutes. Okay. So, that's what, everyone, we have In three. few minutes, right? Okay, sir. So, we'll be having three students with us. Right now, two of them are online, and we can begin with Deepak, are you there? Yes, ma'am. If you can hear me. Yeah, we can hear you. ठीक है, चलो. Okay, so any one of you, who would like to begin first, at what point you thought of clinical psychology, how you started preparing, how things were when you were midway preparing, and how were things at the end, and how then you cleared and all. ठीक है? So any one of you can start, either Kripa or Deepak, anyone. Okay, so I'll start, Deepak. So I think my all interest in clinical psychology and actually pursuing MPhil, the whole credit goes to Trisha ma'am and Atul sir, and of course Gagan ma'am also, because somewhere my interest was dormant, but then these people, like all three of my mentors, they actually boosted in me. Like I was very haphazard in my mind. I wasn't clear where to start, because if you just look at the syllabus, it's like this whole universe you have to cover, and there's there's very limited time to do it. So the all structure that I got, that was from them, and especially the classes, especially the doubt session, the sample papers, and everything. So yeah, I did apply for other places also, but for RML, I think particularly I was very much interested, because since I am a Delhiite, and RML being a premier institute in Delhi, I wanted to go for it. And yeah, I think I'm just losing track of what else to mention. You guys can ask us questions. Probably we can just give you more information. Yeah, so I can see Rupa Sen asking a question. Before Trisha, ma'am, that, before that, Kripa, what I'll do is Deepak will also introduce himself. Dono introduce karto, then alternatively you guys can take questions. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Yeah, Deepak, you should also introduce yourself. Okay, ma'am. Thank you so much. Yeah. Okay, hi guys. This is Deepak, and कुछ इतना कुछ चेंज हुआ है एमफिल में आने की वजह से that we never expected. Even Kripa, not even I. And कहीं ना कहीं पे we had PhD as an option first, and then we got to know that you are not a full-fledged clinical psychologist until and unless you are pursuing an MPhil. So for that reason, that was the craving for perfection, I chose this path so that I do not lose any thread. So Kripa, your in mic that is case, on. okay. So in that case, choosing MPhil and getting a proper and clear guidance, well, the credit really goes to UIBS this time, because having so many things, so many books, so many websites, you'll never get an idea of how to prepare for net psychology differently and MPhil clinical psychology differently. They both have different courses at many different phases. So when you finally choose to go for MPhil, you really need a direction who has already been through it. And Trisha ma'am was freshly she freshly acquired the course, she passed it, and she directed us very clearly. Even the CIP, ma'am, I mentioned you right there that CIP exam was. Yeah, CIP Deepak, course mention was, about. yeah, ma'am. Yeah, I told you that CIP paper was completely, or I would say that 50% of the questions were that you told us. So you need that clear guidance. तो अभी इस समय पे अगर MPhil आपका एक ऑप्शन है तो RML is really one of the good exposures in Delhi because it's a central hospital. तो बाकी कोई भी क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं आप पूछ सकते हो हम दोनों से, एंड मे बी नंदिनी भी कुछ टाइम पे ज्वाइन करेगी तो we'll help you out. Okay. Thank you, both of you. Thank you very much. Okay. And I really take pride as a
team, as on behalf of the team of UIBS, because I remember preparing with, I remember the days when we would prepare, when we would take classes for you guys, and there's this day today when we invited you to conduct this webinar for us. We have invited you as a Yes, ma'am. resource person, so it's really too much. This is such a pride moment for me, especially. So I can see Nandini also online. Nandini, are you there? Yes, ma'am. Yeah, so Nandini, आप भी introduce करो, ठीक है? Thank you so much. You're like, it's so nice for me to invite you guys as a resource person today. ठीक है? आप introduce करो, and then 3 of you can take questions then. Okay. So I am in RMN. I'm the second year student, and again goes to Trisha ma'am. She was the one who encouraged and actually gave us all the guidance कि कैसे करना है. आपको मटेरियल तो मिल जाएगा बहुत जगह से, बट एक जो गाइडेंस होती है कि उस मटेरियल में भी आपको कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा. बाकी थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. Trisha ma'am, Atul sir. Okay. ठीक है. So now you can go to the chat box, everyone, and then if you find questions, as Kripa already had read a question, but I interrupted because I wanted everyone to get introduced. So Kripa, you can start with that question. You were already reading halfway. Oh, okay, ma'am. Thanks. I think the first one is what are the branches we need to focus on more? So, Rupa, do you actually refer to the topics to be referred for tomorrow's exam? Then, like what happened during our entrance was there were I personally feel there was a lot of focus on statistics that time. But then this evening, like since this is the last evening before the exam, so I think a quick revision through all of your topics would be nice, rather than, yes, you can have that awareness that last time this was the focus on. But I think before that, the focus was, I think, on like personality and developmental. So we can't really say there is no trend. So the trend keeps on changing. So I think just an awareness of all the fields right now, and a quick revision or a quick go through of your topics or your notes you've made would be really helpful. Or some of the sample papers, which I'm sure you people might have attempted with the UIBS. So if you would save those answers also, like those questions. So yes, a quick revision through all of them can be helpful. Have you answered your question, Rupa? Is there anything else you would want to ask about that question? Okay, we'll follow the chat box, I guess. Okay. Trisha ma'am. Yes, sir. Hanji. There is one question, I think, from Soumya. How to approach paper when it's negative marking? These are the few questions, and I want you to tell something about like last minute what kind of mistakes they do. Okay. So at least you address that thing also, because that will be a very like important thing for them. Yes, sir, definitely. Right. Okay. So I just go through the chat questions once, and then we'll see what I can contribute, and then I'll hand it over to the students again. Okay, so when it's regarding the negative questions, I would surely suggest you never ever first attempt the negative questions. Never ever mark them. Go to them. This is my experience, because I have given so many exams that were mainly negative markings, that used to get negative markings. So the first mistakes that I used to do was, whenever I was unsure 50%, then also I used to mark them. And you never have that luck whenever it comes to the multiple choice questions. So leave them for the last, and do not attend all of them when it's like, if you have 10 questions you are not sure about, do not mark all of them. You can mark 2 of them if you're 50% sure. Even if you're 25% sure, do not mark them. So that is my experience about the negative markings. Okay. Thank you, Deepak. So as Deepak said, do not typically start with the questions which you are not sure about in the beginning. Okay, come back to them. Come back, read again, process it. And what I would suggest is, if there are statements, which have a little difficult words involved, okay, what you do is arrange the statement into an example.
Suppose the question is from learning and they're asking you about schedules of reinforcement or something. Arrange the question in your mind with an example. If it makes sense, then do you understand? Go ahead answering that question only then. Sometimes statements are difficult to comprehend. Put it in an application form. Do something. Make it in a statement in normal Hindi mein kar lo, वैसे कर लो. Something which you understand and something you can decode the whole statement. Okay, only then go ahead with the negative marking. And as sir said, since the last minute tips, last minute things would be revise the basics once. Okay, do not go and right now go and open something a thick textbook and sit down for studying. Okay, last moment is revise the basics, because what happens there when you are answering, when you are attempting the questions and you get stuck in the basis, साइड बाय साइड वो इमोशनल प्रोसेसिंग भी हो जाता है, ये नहीं आ रहा मुझे, ये तो इतना सिंपल था, ये तो कितनी बार पढ़ा है, थिंग्स लाइक दैट कीप ऑन क्रीपिंग इन योर हेड, एंटरिंग इन योर हेड एंड डिस्ट्रैक्टिंग यू. सो व्हाट यू डू इज बेसिक्स पक्के करो. आज बस इतना है, बेसिक्स पक्के करो. ठीक है, बेसिक्स करके जाओगे, वहां जो इजी वाले एटलीस्ट क्वेश्चंस होंगे, जो एप्लीकेशन बेस्ड भी होंगे, आपके टिपिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड होंगे, वो आपसे आंसर हो जाएंगे. कोई distracting thoughts नहीं आएंगे. You will have a clear mind to attempt the questions which you think you don't know, and you need to work on them. You need to decode those questions. Okay, and again, sleep properly, guys. ठीक है? Right. Sleep properly. Yeah. Usually I suggest the thing that don't do anything before the examination, at least one day before. Just leave it and go and attempt the exam. Usually I suggest all students like this only, so that like you are relaxed, because when you are in anxiety, then you may like mark wrong answers also, because that happens many times. And one or two, if you will do only 1 or 2 marks आपका अगर कम हो गया, तो it means आपका 8-10 नीचे रैंकिंग आ गया. So it is very important कि आप relaxed होके आपको जाना चाहिए. That is the most important thing. And understanding, because sometimes a student comes to us and they say कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत कम सीट्स हैं. So उनके लिए भी मेरा ये कहना है कि if you can do MA psychology with 55%, you can like crack MPhil psychology of any institute, not only like private or government, any institute, top institute you can crack. So remember this thing like in mind, and you can prepare for that, and you can crack any examination of MPhil. या एक चीज जब हमारे पास आते हैं इनिशियली सब, वी वेरी वेल रिमेम्बर, दे आर वेरी इट्स ऑब्वियस, दे वेरी पजल, दे वेरी कंफ्यूज, दे वेरी मच ऑन द लो साइड ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स. This is a major concern with everyone, that number of seats इतने कम क्यों हैं. So my reply, and our whole reply is this: you just need one seat. You're not going to occupy 12 of them. You just need to secure one seat for yourself. ठीक है. So again, I'll hand it over to Deepak and Kripa and Nandini now. ठीक है, Deepak, Kripa, Nandini, अब आप देखो. There are some questions which I can you should also handle now. So I just wanted to add one thing regarding what Kripa said, that about research. Almost always RML का research और stats पे हमेशा ज़्यादा questions रहते हैं. In fact उनके जो मेरे ख्याल से उनका जो ब्रोशर्स में भी होता है कि सबसे ज़्यादा मार्किंग उसके लिए है. एंड ऑल्सो हमारे टाइम पे सोशल साइकोलॉजी के लिए था. So there are a lot of questions about sample paper and question papers if they are available. तो sample papers तो available नहीं होते हैं because they are taken back जब वहाँ पे आप देते हो test, तो they are not available. But we give you a set, and in UIBS we have provided students with a set of sample and mock papers every now and then, like one pre-test before the chapter starts and one post-test after the chapter. So that we continuously do irrespective of the fact whether they are enrolled for MPhil or NET. One thing I wanted to add was that ये सर ने इनफैक्ट आप मैम ने और सर ने हम लोग बताया था, और ये मेरे एमफिल पेपर में आया भी था कि फेमस ऑथर्स ने कौन सी बुक्स लिखी हैं. वो समटाइम पीपल डोंट रीड दैट, बट उससे भी काफी क्वेश्चंस आए थे मेरे टाइम पे. सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च एंड दिस. Okay. Thank you, Nandini. Deepak, would you like to take a few of the questions now? And Kripa?
वेल रिगार्डिंग लास्ट टाइम अगर रिवीजन का है That तो thing. स्टैट्स में से आप लोग अगर आपकी स्टैट्स स्ट्रांग है तो ठीक है, बिकॉज फॉर्मूलाज एंड ऑल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेनली आप टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज वहां से बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। एंड उसमें आपकी स्टैट्स अच्छी हो ना हो, यू विल एबल टू डू द रिसर्च क्वेश्चंस। टाइप ए, टाइप बी, एरर, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी बहुत अच्छे से कर लेना। और बुक्स एंड ऑथर्स लास्ट टाइम पे पढ़ के जाना, इजी रहता है कि याद आ जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स कर लो, वैलिडिटी रिलायबिलिटी कर लो, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कर लो, अल्फा बीटा एरर कर लो। उसके अलावा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत अच्छे से कर लेना। उसके टाइप्स और मतलब सिचुएशंस देते हैं वो कि इसमें कौन सी रिलायबिलिटी कौन सी वैलिडिटी अप्लाई होती है। ये लास्ट लास्ट टाइम के क्वेश्चंस हैं। और मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस बहुत इजी इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो कर लोगे तो इट विल बी लाइक, पिछली बार आई थिंक 20 क्वेश्चंस थे जो रिसर्च से थे और स्टैट्स से थे, तो आई वाज एबल टू डू ओनली आई थिंक 10 और 12 क्वेश्चंस, बट स्कोर वाज क्वाइट फाइन। तो बाकी जनरल साइकोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है, नीरज आहूजा काफ़ी हेल्प करती है। और उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये तो आपको स्टैट्स की जरूरत भी नहीं है, थ्योरेटिकल है। दैट विल हेल्प फॉर द लास्ट टाइम। Yeah, taking on more questions. So I think mostly my colleagues have answered most of the questions, but there was this one particular question like what should be the aim out of 100. So Soumya, I asked that question. So Soumya, I don't think our marks are actually revealed. Like there's just a list put up at the end of the qualifying candidates in the order of their roll numbers. So we really don't know what are the marks, and so I think you should like probably I think last to last year also that wasn't disclosed. And the next question is from Junaid, that is the question paper divided into parts or different subjects? No, Junaid, the question is in a mixed up order. I am not really sure whether there were 100 questions or there were 120 questions also. I remember like the last 4 or the last 5 questions were some of I think they were a lot practical based where no particular answer was right. So it was more of upon our understanding. I think it was a case description and then we had to choose what we felt right at that moment. This was from last year. And next is please suggest books for clinical for RML preparation. I think that Atul sir and Trisha ma'am probably are the best guides for that. I'm sure you must be all guided all the time to refer to these books and probably their resource material, because when you open the book, so books are like the whole world over there and it's not practically possible. So like what helped me was their notes, because they was in a concise manner. So I only had to focus on what is important. I did not waste my time in like going through all the unnecessary things also, which is given in a textbook. So you can do that. And are there any question papers available for MPhil entrances? So no, none of the MPhil entrances conducted across India, they like none of the institutes they put up their question papers online. So yeah, but the question papers are not put up online. But if I tell you from my experience, so when last year I gave my exams, so all of the entrances which I gave, and mostly like the questions what sir and ma'am had told, many of the questions from what we were taught during our classes, and especially even we had these evening classes like just before the exam and throughout our course. So I happened to clear GMCH entrance, then Gwalior Mansik Arogyshala entrance, GPU entrance, and then finally I wanted to go for RML, so I cleared RML entrance. So had it not been like the questions they told me, then probably it was difficult for me also to clear it. So yes, so not exactly question papers, but the guidance helps a lot to prepare for these MPhil entrances. Yeah, so I think somebody else would like to take up any questions. So somebody has asked that do we need to study the disorders in detail and the respective codes? Yeah. So any one of you please answer that. So no, not respective codes. They don't expect you to know DSM and ICD by heart. That is what you will do in MPhil. But yes, during the interview, if you are saying that if they ask you regarding research, what would you want to take up? And if you say that
or you have worked somewhere, if you say a particular disorder that you work most with that kind of people with certain disorders, then you should know in and out about that. So that Trisha ma'am had also told me during my time that you can direct your interview. So whichever direction you want it to go into, then us topic ko you should be thorough with it. So in that sense, yes. But other than that, they don't expect you to know ICD and DSM. Maybe the changes that had happened, and up to ICD 11 is also there, but I don't think ICD 11 they would ask. But yeah, DSM 5 changes they can. But other than that, they don't need thorough. And I'll also give my 100%. yeah, Nandini, I'll Sorry. just give my input here just because the Tenzing is asking something about the disorders in detail. Okay, so what happens is, you, especially in the interview, they don't expect you to, you need to, as you know, Nandini said, these disorders you would be taught during your tenure in MPhil. Okay, the codes and all. And once, within a span of 2-3 months, this codes and all will be very handy and you'll get a hang of everything, especially the ICT. Okay. You just need to know the important upcoming stuff in the field, which is, the differences between DSM-4 and DSM-5. These are typical questions they ask you in the exam. Okay. So, and what if, as you said in the interview, I've always told the students, we always teach the students in such a manner that, interview, you can direct it, you can actually, be very confident in the interview. Because what happens is that there's most of the time they ask you, ki internships mein kya kiya hai, because students nowadays attach a lot of forms of internships साथ में, a lot of letter of appreciation from 100 institutes and all. ठीक है? So since they attach and they tell ki हाँ, I have done multiple internships and all, they tend to ask you what disorders आपने क्या चीजें ज्यादा देखी हैं. सो पीपल टेंड टू गिव आंसर्स लाइक हमने डिप्रेशन के केसेस देखे हैं, हमने स्किज़ोफ्रेनिया देखा है. सो अगर देखा है एंड यू आर मेंशनिंग, make sure you know the latest stuff happening in that field. You're mentioning about schizophrenia, but you do not know the changes in DSM-5 about schizophrenia. That makes no sense, right? You're mentioning about schizophrenia, but you do not know the psychological causes. No one's going to ask you about the neurotransmitters there and there. And in case you do not answer, that's okay. That's still acceptable, but you cannot answer about the psychological causes and you say that you've rigorously worked with schizophrenia in your internships. Then again, it doesn't make sense. Then a little bit about, so जैसे मैं बोल रही हूँ, whatever you mention regarding your internships, your interest areas, so far what you have done, masters में what which subject interested you, you cannot mention the names of those textbooks. So the thing is, things should be in harmony, whatever you are mentioning, in the same category. Discrepancy आपकी खुद की बातों में होगी, then you cannot lead the interview to a good ending. Okay? सो डिटेल्स में किसी चीज के नहीं जाना है, स्पेशली क्लिनिकल के डिटेल्स में इतना नहीं जाना है. चीजें पता होनी चाहिए आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, एपिसोडिक डिफरेंस होता है एपिसोडिक डिसऑर्डर्स में, ये चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से. ओके, बेसिक अगर मैं पूछूं एबनॉर्मल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन में अगर आप ये मिस कर जाओ कि इट इंटरफियर्स विद द सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शन, ठीक है, this is where you give them a clue that you have a weak clinical aptitude. So that is what we teach our students, that you need to show, you need to not just show, you need to actually inculcate and develop that clinical aptitude to lead the interview properly. Okay, so yeah, you guys can take questions now. Right. Okay, and one other thing I want to include, that you should know about Mental Health Act also, as Yes. at least briefly about that. And when you are in interview, don't say like that ki I have worked in this hospital, that hospital, in my internship I know everything. That impression you should not give, because that is not a supervised training and you just observe the cases. So जितना आपको पता है आप उतना बताओ, नहीं पता है you can say no also. That will not create any negative impact. अगर आप गलत बोलेंगे and सही नहीं होगा आपका आंसर, that will create more negative thing. So and sometime I have seen, because I was also a faculty member as in MPhil psychology, clinical psychology. So sometimes people come and they say, because I need RCI license, that is why I am doing this. I am coming from the for this course. So it shows that you are not interested in learning. So don't make these kind of statements in the interview, in any interview. जहाँ भी आप MPhil का वो देते हैं, क्योंकि ये कई बार
सुनने में आता है कि आई हैव वर्क लाइक 2-3 years से मैंने काम किया, ये किया, वो किया, एंड आई नीड IC license, that is why I am doing the MPhil clinical psychology. Don't use these kind of sentences, because you have to show that you want to learn. That is why you are coming for this MPhil clinical psychology. Now anyone can take the questions, other questions. Yeah. Baki Well, even it's really the interview hack that Atul sir just mentioned, that even if you are not empathetic at all, please show empathy regarding the patients. That is the first thing everybody wants to hear why you are being a MPhil student. Okay, and the second thing is, even if you have never done any internship, do not say I have never worked previously with any or even volunteered at any of the institute, even if it's an organization, even if it's an NGO. Just mention that you have worked somewhere. Just read. This is a kind of interview hack that which I was very straightforward in my interviews, and I got rejected continuously. But then when it came to the selection in RML, then yes, I had to say that I have worked with one of the very prestigious institutes, and then the hack was that I read about that disorder, everything from everywhere. I read about autism and alcohol substance use, and then whenever the questions were portrayed, I just answered them according to the textbooks, that how the patients look, what are the typicalities that patients follow. So you need to have that. हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है, थोड़ा मैनिपुलेटिव होना है. एंड रिगार्डिंग जो डिसऑर्डर्स का है, उसमें भी ये है कि सब कुछ नहीं आता है. स्किज़ोफ्रेनिया OCD बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पूछा आता है, तो वो नीरज आहूजा काफी है उसके लिए. और मेनली जब इंटरव्यूज की भी बात आती है तो डेफिनेशंस हमेशा पूछी जाती हैं. रिगार्डिंग पर्सनालिटी की डेफिनेशंस कई बार पूछी जाती है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है. तो यू नीड टू हैव दैट, एक थॉरो प्लानिंग उसकी होनी चाहिए. Yeah, just one thing here, as Deepak mentioned, when you are mentioning the definitions in interview, quote people, quote the eminent people. पर्सनालिटी के लिए वी कोट गॉर्डन ऑल्पर्ट, ठीक है. इंटेलिजेंस के लिए हम वेशलर को कोट करते हैं. साइकोथेरेपी की डेफिनेशन के लिए हम वुलबर्ग को कोट करते हैं. तो ये 3-4 चीजें हैं, इनमें आपको कोट करना ही पड़ेगा. डू नॉट साउंड वेरी सब्जेक्टिव व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दीज डेफिनेशन. दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है. एंड देन या दीपक इज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली, ध्यान से सुनो. Okay, I want to add something, Trisha. So, hello, I'm audible. हेलो, हाँ जी सर, बोलिए. हाँ. So at this point of time, जब आप जा रहे हैं एमफिल के लिए, सो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको सारी आनी चाहिए. दे आर एक्सपेक्टिंग वॉट एवर यू हैव रेड इन MA साइकोलॉजी, लाइक चाहे वो डिसऑर्डर्स हैं थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली एटलीस्ट. सो जो भी आपका डिसऑर्डर्स हैं, जो भी हैं, क्या आप उनको अच्छी तरह से जानते हो? जो आपने नॉर्मल साइकोलॉजी या एनी पेपर यू हैव रेड ड्यूरिंग योर MA, चाहे वो पर्सनालिटी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल, व्हाटएवर इट इज, क्या आप थ्योरेटिकली उसके बारे में क्लियर हैं कि नहीं है? दैट इज द like aim, because I already interviewed these like students, so during my when I was assistant professor there. So अब हम ये नहीं देखते कि आपको प्रैक्टिकल कितना नॉलेज है. दैट they will teach you, that is the training. So they are like looking for how much you are theoretically sound. And अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है थोड़ा सा बेहतर, and you have that aptitude, हम बिकॉज वी सी एप्टीट्यूड कि क्या आपका लर्निंग का एप्टीट्यूड है, आप क्यों साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आना चाह रहे हैं. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. दैट थिंग्स शुड बी क्लियर फ्रॉम योर आंसर्स एंड योर बिहेवियर. सो ये सिंसियरिटी आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में दिखनी चाहिए. आपको कम आता होगा चलेगा, थोड़ा सा कम होगा चलेगा, लेकिन ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. एंड इट इज नॉट लाइक कि आपका एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा. अगर कोई 34 इयर्स का आ रहा है, 45 इयर्स का आ रहा है, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है, तो उसको ज्यादा मिलेगा. यूजुअली लाइक दे प्रिफर न्यू पीपल. ऐसा नहीं है कि आपका, कई बार ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम MA करने के बाद 2 साल कहीं काम कर लेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे MPhil में जाने का. ऐसा नहीं होता है. That was from my side. So again, so yeah, we can take other questions.
या तो वो मिसकंसेप्शंस जो होते हैं ना, दैट somebody is coming with a 5 years work experience somewhere very nice and all, ऐसा कुछ नहीं है. And then somebody who's also going with a 5 years work experience, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है. It all depends on how you're performing in the written, and plus how you're directing, how was your performance in the interview. They don't have anything to do आपके background से. Okay, they are also exhausted taking interviews and all. उनको कुछ भी राइट आप, राइट हाँ. राइट. हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू, व्हेन लाइक हम लोग इंटरव्यू करते थे दैट टाइम, यूजुअली हम लोग ये देखते थे, क्योंकि जो 5 साल 8 साल काम करके आता है, सो उसको उसके साथ उसको सिखाना मुश्किल काम होता है हमारे लिए. तो सम टाइम अगर बहुत ही अच्छा कैंडिडेट नहीं है, सो सम टाइम फैकल्टी मेंबर्स को थोड़ा सा ये भी होता है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा वो है, सो उसका एक एटीट्यूड होता है कि शायद मुझे सब आता है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो समटाइम क्रिएट नेगेटिव थिंग्स जो फ्रेशर्स के साथ में नहीं होता है. सो डोंट टेक इट अदरवाइज. सभी का इक्वल चांस है होने का, लेकिन किसी का अगर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो इट डजंट मीन कि उसका होगा. या तो वही जैसे सर कह रहे हैं, दे एक्चुअली आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द बैकग्राउंड. उनको क्या चेक करना है, आपका एप्टीट्यूड है क्लिनिकल साइकोलॉजी आगे ले जाने का, फील्ड को सीख के कंट्रीब्यूट बैक करने का कि नहीं. ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल तो आपको सीखना है वहां पे. ओके, यू डोंट बेसिकली हैव टू साउंड समवन, you basically have to sound like a person who has done masters in psychology. ठीक है, उतना आपको बस साउंड करना है. एंड देन दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस एंड यू हैव रेड एंड यू नो दैट दीज आर द, बी थॉरो विद द सिलेबस ऑफ आरसीआई. क्लिनिकल साइकोलॉजी का एमफिल का सिलेबस क्या है. ठीक है, दिल आस्क यू दैट यू नो दैट दिस सिलेबस, ये चीजें पढ़नी है आगे. ठीक है, थोड़ा सा टेस्टिंग का थोड़ा बहुत देख के जाओ, लेट ये टेस्टिंग की चीजें देख कर जाओ. बेसिकली यू नीड टू दे शुड गेट द फील दैट इट्स बीन 5 years you are in the field and studying psychology. Okay, you shouldn't sound like someone who is like on off करे तो ही psychology समझ में आएगा बटन. Otherwise you're a different person. By now it should be embedded in your personality. Okay, ठीक है. Yeah, अभी please rest 3 of you take the questions. Yes, ma'am. So there's a question on for names of authors and questions and famous books. Is there a list, or what should we refer for such questions? So see, Ankur, you don't have to like actually give all your time to a long list of books. So you can focus on eminent people in the field. Like you can refer to the works of Skinner, Freud, Viktor Frankl, and Abraham Maslow. I think that would suffice. Only these eminent people and the books written by them, or if some book made an important contribution. So very like just to the point, focus on that. Next is how to go about biological basis of behavior. Yes, that's a very dreaded topic, but I would say like for the last minute, like a quick things about say for I think the topic species typical behavior was a topic in that. So what did Lawrence contribute, what was ethology, what are fixed action patterns. So the question won't be that direct, but these are the main, like these are some of the highlights in this chapter that you should know. Like if we are talking about neurons, so you should know what part of the neuron does what function, who sets information to whom, and then how is the information further transported. And again, for the brain parts, you should know the difference between the major brain parts, and what are the different contributions of the neurotransmitters. So these to the point, like they would check your conceptual understanding. Maybe it would be possible that a situation is given and then they ask you like, okay, in such a situation, what do you think, which of the following parts of the brain would be more active. So yes, by that a quick revision would do. Next is, do they give importance to research papers you have done during your interview? So again, yes, see, now that is again a trap they can ask you. So you mention about your research paper, and then from there you tell your methodology, or you tell about your topic and how did you do things. So they get a chance to ask you questions about that, and then they check your statistical and research acumen about that. And if you do not have it, then probably you should have sufficient reasons to suffice that why have you not done it. And if you have done it, then you should be well versed with everything from the scratch about your research which you did during your masters. I think somebody else can take it now. Yeah. Nandini or Deepak, you guys can also take the questions. So Karnika has asked, what is weightage of interview and written exam? इंटरव्यू तो आप तभी पहुंचोगे जब आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाओगे.
इट्स लाइक इट्स इक्वल, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। कई बार रिटन एग्जाम का हो जाता है और लिस्ट में ऊपर भी आता है नाम, बट फिर इंटरव्यू में नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हो। सो इक्वल वेटेज है, ऐसा कोई वो ज्यादा नहीं है। नीरज आहूजा विल 7th एडिशन डू। नीरज आहूजा आप पढ़ लो यहाँ पे, लेकिन आप वहां पे जब आपसे पूछेंगे कहाँ से पढ़ा है तो प्लीज आहूजा मत बोलिएगा कि नीरज। वो त्रिशा मैम वुड बी अ बेटर पर्सन टू टेल यू व्हाट बुक्स यू शुड से कि आपने कहाँ से पढ़ा है। Actually, see, what Right. happens is, हाँ, कि you mentioned Neeraj Ahuja, but you at this point of time when you haven't seen those patients, that typical patients which जिनके symptoms के बारे में clearly बताया गया, you fall into a trap. ठीक है? So just mention that, actually not mentioning last day nahi, but then you should also get a habit of reading Kaplan Sadok Kharido, since you now want to go into the field. Short textbook of psychiatry, OTP वगैरह खरीदो, ठीक है? OTP. Start reading this book little and little, and then once you're asked questions, so it is good to mention these books. आप इनके बारे में मेंशन करोगे तो प्लीज एडिशन एंड ऑथर्स पढ़ लेना। मॉर्गन एंड किंग हम सब बोलते हैं, लेकिन मॉर्गन एंड किंग के पीछे 2 और लोग हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं बोलते। देन दिस इज वेयर यू गेट कॉट इन द इंटरव्यूज। बुक्स बताओ, अच्छी बुक्स बताओ, मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू देम एटलीस्ट बिफोर यू मेंशन सम वेरी बिग नेम्स, एंड यू मेंशन ऑल द 4 ऑथर्स। ओके, देयर आर 4 to 5 ऑथर्स जब होते हैं, हमेशा 4-5 के बारे में बताइए, कभी 1-2 को मेंशन करके मत छोड़िए। दैट्स अ वेरी layman and in very not informal way of mentioning, the way you talk to your friends कि हाँ मैंने मॉर्गन एंड किंग से पढ़ा। 2 more people, mention the edition, mention the 4 authors, okay, and then talk about it. So talking about books, say नीरज आहूजा क्या है, बहुत अच्छी बुक है, but it's just a run through book. They don't tell you anything in details. Okay, so studying clearly and studying the basics clearly is what is expected. So that's what mention good books, और अच्छी books हैं, काफी हैं फील्ड में, वो mention करो along with the proper edition and all. Yeah, sir कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इंटरव्यू और उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, बिकॉज मैं उस इंटरव्यू पैनल और सारी चीज़ों में रहा हूँ, सो वो मुझे पता है। यूजुअली जो वेटेज ज़्यादा होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का होता है। इंटरव्यू का 20 to 30% होता है, डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। समटाइम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, बट वी नो दैट, एंड that is like well defined in like government organization, because you cannot give more weightage to interview, so that जिससे कि कुछ problem ना हो, any kind of क्या कहते हैं partiality वगैरह ना हो, so that is why it is defined कि 20 to 30% का आपका इंटरव्यू रहेगा। If you have scored well enough in your examination, written examination, so आपके chances बहुत ज़्यादा high हैं to clear the interview also, even if it doesn't go that well also. लेकिन again problem क्या है, because suppose the highest like score is 80, so 80 पे there is not only one person, there are 4-5 people will be there at 80. So if your interview not gone well, you will be out from there. So that is the thing. So interview भी important है उतना ही, because you have to fight for 5, 6, 8 seats, right? So like जैसे मैंने बोला 80 मार्क्स पे एक पर्सन नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे। सो इंटरव्यू इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो वेटेज होता है वो 20 to 30% डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट्स होता है इंटरव्यू का। एंड किसी ने अभी नीरज आहूजा की बात हो रही थी, तो बुक्स के बारे में किसी ने पूछा था, तो नीरज आहूजा के बैक साइड में भी दिया हुआ है, लेकिन देयर आर सम एरर्स आल्सो, तो दैट you have to check. There are list of books and like Nobel Prize winners and all that you can go through if you want to. Okay, so question ले सकते हैं जो भी like अनन्नी आप कुछ बोल रहे थे या? हम एक इनिशियल पैटर्न पूछा है मेघा शर्मा की, क्या स्टडी पैटर्न होना चाहिए। तो एक तो जो मटेरियल आपको यहाँ से मिला है उसको थॉरली पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हो बार पढ़िए। मैंने अपने टाइम पे आई डोंट नो कितनी बार पूरा रिवाइज किया था। मॉर्गन एंड किंग के फर्स्ट 10 चैप्टर्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वो भी बार बार पढ़िए, क्योंकि उसमें भी कई सारी चीजें जो एक लाइन में मेंशन होती हैं कई बार वो आ जाती हैं पेपर में। वहां पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा होता है, वो कहीं एक लाइन में मेंशन होता है। पर आप जब काफी बार उसको पढ़ेंगे तो वो आपको
नजर में आएगा। तो आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ कुछ आपको नजर में आएगा। Do they ask to perform any of the practices like Rosha? No, they will not ask to perform, like they not administer anything, because that's what they will teach you when you are there. But yes, they can ask you certain questions कि कितने कार्ड्स होते हैं, फादर कार्ड क्या होता है, तो अथॉरिटी वाला कार्ड जो होता है वो कौन सा होता है, कौन से कलर्ड कितने होते हैं, कितने ब्लैक व्हाइट होते हैं, ये सारे जो एक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अगर आपने अपने मास्टर्स में भी पढ़ा होगा। और वन मोर थिंग, लाइक व्हेन यू आर मेंशनिंग एनी टेस्ट, आप शॉर्ट फॉर्म में मत उसको बोलिएगा, उसका पूरा नाम बोलिएगा जब भी कोई भी टेस्ट मेंशन करेंगे। डू वी हैव टू लर्न फॉर्मूलाज फॉर स्टैटिस्टिक्स? आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे वैसे, और फॉर्मूला भी नहीं, मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि किसी उसमें फॉर्मूले पूछते हैं वो स्टैट्स के। 90-10% पता नहीं मेंशन होगा अगर तो ऐसा होगा, बट मेरे को लगता है वेटेज ऑलमोस्ट उतना ही होता है। Do they ask about practicals that we have done? Yeah, they will ask what you have administered or learned. Some good MCQ books. I did not refer to MCQ books. I did all the tests that I was getting from the coaching, and that was a very good marker because I could see my progress. Before I had started, I had done उसके बाद till I was about to appear for the exam, I could see the consistent scores going up. There is negative marking, yes. Fortunately, this time there is negative marking. It's given in the admit card, but during our time there was no negative marking. अच्छा, क्वेश्चंस के साथ में नन्नी एंड कृपा एंड दीपक, कैन यू ब्रीफली टेल देम लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड, लाइक कैसे आपने तैयारी की, इनिशियल स्टेजेस में क्या प्रॉब्लम आया, देन when you started feeling कि हाँ हो जाएगा, because these are the issues that most of the people ask students. Sometimes they are confused, होगा कि नहीं होगा, क्या करें. Sometime I have seen कैसे पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस आया है, हाँ, now you can tell them about that. कई बार कृष्णा मैम भी बताएंगी, कई बार ये भी होता है कि हमें लगता है कि this student like has potential, इसका हो जाएगा, but they are so like sometimes they are so negative and they are about to reach that goal, and but sometimes they leave that thing or they start coming to us. This kind of thing happens. So वो जर्नी आपकी कारी आप थोड़ा सा अगर बताओगे, that will be motivating, like in 5 minutes, if you all can tell, so that will be very motivating for these new people. Sometimes it happens that we identify a student, even if they come for something else, we identify and we motivate them, like it feels कि हमने कोई क्लिनिकल का बहुत अच्छा बच्चा लूज कर लिया, चाहे वो हमारा कैसे इंस्टीट्यूट एमफिल का नहीं हो, हमें लगता है हमने क्लिनिकल का बच्चा लूज कर लिया. Right. ओके, या बताइए दीपक, नंदिनी एंड कृपा. Okay, so regarding preparation, confidence भी आपका तभी आता है जब literally आप पढ़ रहे होते हो. It was जब भी and I'm really very average student, मेरा 70% से ऊपर मैंने कभी स्कोर ही नहीं किया आज तक. So it never comes to कि यार आप कितने ज़्यादा brilliant हो अपने वर्क्स पे, अपने आपका हो सकता है आपका सिलेबस बहुत अच्छा आप याद कर लेते हो, लेकिन जब कंपटीशन के टाइम पे आता है तो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी. तो जब भी मैं UIBS आता था यहाँ पे, मैं ऑलरेडी उस टॉपिक को पढ़ के आता था, एंड मैम न्यू कि मैं कितना इन्वॉल्व रहता था क्वेश्चंस में. आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स वर, कि साइकोलॉजी वाज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर मी बिकॉज आई यूज्ड टू इनकलकेट एवरीथिंग, एंड फिर मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज भी कर रहा होता था. एंड मैं हमेशा उस चीज को रिवाइज कर रहा हूँ या अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. सो इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस. आप जितना बोलोगे उस चीज को उतना ज्यादा याद होता है. इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी की डेफिनेशन मुझे शायद अभी तक याद होगी, चाहे मैंने कभी रिवाइज नहीं की, बिकॉज इतनी बार बोल चुका हूँ उस डेफिनेशन को. तो जितनी बार आप कोचिंग आते हो आप, और दिस इज द टाइम, आप 3 महीने दो यार. मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उससे पहले, मेरी ग्रेजुएशन तक साइकोलॉजी में नहीं है. तो मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करी है, और उन 3 महीनों में आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 4 hours मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैंने वो भी नहीं पढ़ा.
बट वो 4 आवर्स मैंने दिए हैं और बहुत अच्छे से दिए हैं। यूआईबीएस आने से पहले का 1 घंटा, यूआईबीएस के 2-2.5 घंटे, एंड देन उसके बाद जाने के बाद 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, एंड देन उसके बाद मॉक टेस्ट और जो टेस्ट होते थे हमेशा उस पर हम करते ही करते थे। तो अनटिल एंड अनलेस यू योर सेल्फ फील कि हाँ मैंने पढ़ा है, और पूरे दिन भर का आपको 4 घंटे का टाइम को पता है कि ये टाइम मैंने कहीं और नहीं दिया, मेरा फोन मुझे नहीं पता कहाँ है, मेरा लैपटॉप मुझे नहीं पता कहाँ है, मेरे पास मेरी बुक्स पड़ी हैं, मेरे पास मेरा स्टडी मटेरियल पड़ा है, एक स्टडी टेबल है, दैट्स इट। उसके अलावा वो 4 घंटे मेरे कहीं नहीं जाते थे। तो दैट वाज द टाइम। वो 3 महीने दे दो, उसके बाद आपको पता होता है कि मेरा कभी कोई एग्जाम ऐसे जब प्रीवियसली मैं ऐसे पढ़ता तो क्लियर नहीं हुआ था, बट सडनली मेरा नेट एग्जाम क्लियर हुआ, देन केजीएमसी क्लियर हुआ, देन सीआईपी क्लियर हुआ, देन आरएमएल क्लियर हुआ, देन उसका तेजपुर क्लियर हुआ। एंड आई वाज ऑलवेज अबाउट कि वो 7th रैंक, 6th रैंक, 5th रैंक ऐसी रैंक रहती थी। तो आई न्यू कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। और सेम चीज कृपा और मैंने तो काफी, उसमें भी हम साथ साथ रहे थे। तो दिस इज लाइक, करने के लिए आपको सिर्फ वो 4 घंटे देना है, बट वो 4 घंटे कितने सिंसियरली आप दे रहे हो, आप पढ़ने आ रहे हो, आप उतने कॉम्पिटिशन्स में इन्वॉल्व रह रहे हो, एक कंपटीशन की फीलिंग तो रहनी ही चाहिए, तभी आप उस चीज को कर पाओगे। तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी। या योर पोस्ट ग्रेजुएशन मैटर्स, बट ग्रेजुएशन का मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आके पढ़ा है। एंड मेरे लिए ग्रेजुएशन सिर्फ मॉर्गन एंड किंग थी, उसके अलावा मैंने कुछ ज्यादा खास पढ़ा नहीं ग्रेजुएशन का। और उसके अलावा अगर स्ट्रैटेजी भी यही है कि आप सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हो। मैंने मॉर्गन एंड किंग से शुरू किया, 5-6 टाइम्स उसे रिवाइज किया है। देन उसके बाद मैंने हॉल एंड लिंजी उठाई थी, मैम ने मुझे बताई थी। देन उसके बाद मैंने 1-2 बुक्स थी अरिहंत की, वो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद वेबसाइट से पढ़ा था सिंपली साइकोलॉजी। You guys have also तो read Atkinson properly. Atkinson and Hilgard. एटकिंसन, या if you have read Atkinson, you do not need to go for Morgan and King. कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। एक एक बेसिक बुक उठा लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, हर चीज पढ़ लो उसकी, देन गो ऑन टू द हायर बुक्स। Yeah. Thank you, Deepak. Yeah. Kripa or Nandini, would you like to describe your journey, how you started? I still remember somehow Nandini's first day. Like now that I don't remember theirs, but very clearly I remember Nandini's first day. Yeah. Yeah, so I was, I think, the most anxious person ever किसी भी बैच में जो भी आया होगा। No. एंड वो एंजाइटी जब जब पहली बार आई थी मैं, और सर ने बोला चलो मॉक टेस्ट दो, तो आई डोंट नो कितने आए थे, आई थिंक 50s में आए थे कुछ, या समथिंग लाइक दैट। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। बट रेगुलरली कोचिंग आ रही थी, पढ़ रही थी, एंग्शियस तब भी रहती थी। बट जब एमसीक्यू में स्कोर्स थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, तब आई रियलाइज कि नहीं, आ रहा है, समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रिपेयर हो पाएगा या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रही हूँ। पर मेरे साथ ऐसा था कि मैं पढ़ लिया, आज रात को सोने आ रही है, रात को भी ऐसा लगता था कि एक बार देख लेते हैं, अच्छा एक और टेस्ट पेपर सॉल्व करके देख लेते हैं, कुछ हो सकता है इस बार बेटर आएगा और स्कोर। तो मेरा करते करते आई थिंक 7-8-80% तक आ गया था 50 से करते करते। बट दैट वाज बिकॉज आई वाज क्यूरियस कि मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, मुझे देखना है, अच्छा मैंने इतना पढ़ रही हूँ तो कितना ऊपर जा रहा है। और वो आपको कॉन्फिडेंस तभी है जब आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज होती है हाथ में देखने के लिए कि हाँ एक्चुअली मैं जो मैं पढ़ रही हूँ उसका ये रिजल्ट है। तो वन थिंग आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि प्लीज कीप ऑन डूइंग मॉक पेपर्स। चाहे आपको लगे कि नहीं क्वेश्चन पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, तब भी आप करते रहो। जो भी क्वेश्चन पेपर्स, जो भी मॉक पेपर्स आपको मिल रहे हैं, आप उसको डिलिजेंटली सॉल्व करिए। तो वो था। एंड मैंने शायद सबसे ज्यादा परेशान किया त्रिशा मैम को और अतुल सर को कि मेरा नहीं होने वाला, मेरा नहीं होने वाला। बट वो टुवर्ड्स द एंड जाके वो रिलीव हो गई थी, बिकॉज मुझे पता लग रहा था कि आई एम गिविंग माय बेस्ट एंड द रिजल्ट इज शोइंग, तो इट विल हैपन। Okay. No, we actually saw Nandini evolving.
Like we actually saw her evolving. We actually saw her so diligently. She would follow the mock test, tell us, that because mock test results automatically बच्चों को चले जाते थे. ठीक है, until unless कभी कभी हम चेक करके उनको डिस्कस करते थे क्लास में. अगर नहीं भी किया तो उनको तो पता होता ही था. She would come and tell कि ऐसे ऐसे इतने आए हैं. And then I very clearly remember one fine day she told, that increase हो रहे हैं and all. And then luckily before that we had focused a lot on social psychology, because we as a team were preparing notes and all very rigorously for social psychology, and we had taught them. And somehow RML ke that batch mein they asked a lot of social psychology. So things turned out to be very nice eventually for Nandini. ठीक है, Kripa, and yes, Nandini आप कुछ बोल रहे थे, then we Thank you move on for to that. Kripa. Yeah, I was just talking about the net papers and MPhil entrance. No, both are totally different. नेट के क्वेश्चंस जैसे आते हैं MPhil में नहीं आते हैं. जो पैटर्न है पेपर का, that's very different. So, ठीक है, yeah, Kripa. that's it. And thank you, ma'am. Thank you so much. No, thanks. You guys have worked hard. Kripa, would you like to contribute here? Yeah, sure, Yeah? ma'am. So, like, hello? Yeah, can you hear me, ma'am? Yeah, okay. So, if I break down the entire strategy, as sir and ma'am said, like in the initial phase, the middle phase, and towards the ending phase. So, see, what happens, like, we students in the initial phase, like, we all have this thing कि भाई सब notes मिल जाए, सब books एक साथ कर लेते हैं, कि ये book ना miss हो जाए. So, more than like studying, we are focused on यार इसके पास वो notes है, मेरे पास नहीं है, or like just we want to build an empire of notes and books, which actually doesn't work. So rather than wasting your time in building your notes and books ka empire, rather focus on कि okay, like build that empire side by side, but then actually measure your like your progress also. That maybe शायद आज sensation perception नहीं आता था, but आज मैंने कितनी देर sensation perception को दिया, so that I know a few things, so that if randomly if you ask something, then चाहे मैं instantly answer नहीं दे पाऊंगी, but then yes, I can make out that okay, this concept refers to that thing. So initial phase में like this happens a lot कि सब कुछ ये like to gather together. So that is one of the thing, and the only thing saving you from that is like don't lose your focus, that at the end you have to learn and not just gather books or notes. Coming to the middle phase, like that is where somewhere we have actually started learning. We have the awareness of topics. I wouldn't say that we've become a pro in those topics, but yes, we do have a certain awareness. But during that time, like revision bhi ho rahi hoti hai, but then that revision fatigue comes in ki like I have studied this so many times, I don't think I should focus on this, or this is boring, or we tend to lose our focus on that. So that revision fatigue creeps in. But then at this point you have to learn how to like not just get fatigued, but then keep on trying. There are things, trust me, you would read a chapter, every time you'll find different things. For example, like social psychology definitions, like abhi, like like you will see and you'll be like some of them overlap, some of the concepts overlap, and then that is how you have to like like talk to yourself that okay, this is the major difference between things. Similarly goes for other topics also, because the examiner will ask you, like will trick you in such a way that everything, like all the answers, all the 4 options seems right to you, but then your revision, the amount of revisions you have done and not like given to the submitted to the fatigue of your revision, that works. Third, I think when you are at your final stage, like today evening, tomorrow is the exam. I mean, yes, the last stage starts before the last evening. But then I think that time your confidence and believe in yourself that whatever you have done, and just like everything, and not let any doubts come in. Though they will come, we are humans, they will come, but then have that believe in yourself. Summarizing the 3, like in these 3 phases, what is most important is MCQs. Because see, reading a chapter as a whole, like a 40 pages chapter together, is one thing, but then once you start answering MCQs, individual chapter MCQs, and then once you start answering combined MCQs, that is where your actual knowledge comes. You test your actual knowledge. So don't forget, in all these 3 phases, don't forget to practice MCQs, and then whatever is going wrong, understand why that answer wrong, what should be the correct answer, and then take a note of it, of certain things. Like I remember
there's certain like questions which just come up to my mind. Is this this topic given in Atkinson, like given in all the books, about that left hemisphere and right hemisphere, that suppose keynote is written, एक हेमिस्फेयर से की नजर आ रहा है तो दूसरे हेमिस्फेयर और समथिंग के, आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, बट या दैट इज समथिंग that question, like you practice a lot, but whenever that comes again, that is an application based question. So just keep your eyes and be aware of things and of topics. What do they signal, what do they tell? I think that's it I would want to say. Okay, thank you, three of you. I just wanted to add one thing. हाँ नंदी सर, अबाउट ये नोट्स का जो है कि नोट्स ये हम सबके साथ हुआ था कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, नोट्स कहाँ से मिलने हैं, और जितना ज्यादा मटेरियल गैदर हो सकता है उतना कर लो. तो प्लीज प्लीज मत करिए बिल्कुल भी. जितने नोट्स बनाने हैं, पर नोट्स बनाने का भी एक तरीका है. अगर आप पूरी बुक को के वापस पेपर पे लिख रहे हो तो वो आपके नोट्स नहीं है. यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू रीड द होल बुक अगेन ऑन योर नोट्स. तो जो आपको मटेरियल मिल रहा है उसको पढ़िए, मॉर्गन किंग पढ़िए, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, आपके नोट्स बनाने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो वो भी ठीक अच्छी होती जाएगी. आप देखेंगे फिर उसके बाद आपके वन लाइनर बनेंगे नोट्स, सिर्फ एक एक लाइन में आपका होगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी नोट्स इतनी थरो हो जाएगी कि आपको सिर्फ एक क्यू चाहिए. नोट्स क्यूज, तो वो आप अपने जो बनाएंगे वो आपके बेस्ट नोट्स होंगे. कहीं और से नोट्स लेके उसको पढ़ना शॉर्ट वाले, उससे नहीं होगा. मटेरियल लीजिए, पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे अपने आप क्यूज बना पाएंगे बाद में आपके रिवीजन के लिए. सो दैट्स वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू से. राइट. वेरी वेल सेड नंदिनी. एक्चुअली क्या होता है सर, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, लास्ट मोमेंट में आप नहीं टेक्स्ट बुक्स खोल के पढ़ पाते. नॉट जस्ट वन डे बिफोर द एग्जाम, आई गेस 3-4 days ऑल्सो बिफोर द एग्जाम. यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, सिट बैक, टेक आउट योर नोट्स, अपने नोट्स निकालो, उसमें से आप रिविजन्स करो. उसमें आपने कीवर्ड्स लिखे होंगे, ऑथर्स लिखे होंगे, एमिनेंट पर्सनालिटीज के कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड लिखे होंगे. सो इस तरीके से यू कैन मेक कॉलम्स एंड फ्लो चार्ट्स फॉर योरसेल्फ. थ्योरीज को रिवाइज कैसे करोगे, फ्लो चार्ट्स में थ्योरीज अरेंज कर लो. ठीक है, you don't have to go and read the whole bulk passage again, the whole paragraph again. Okay, this way last 3-4 days should be your strategy. This actually should be done. Okay, Trisa ma'am, hello. Yes sir. Trisa ma'am, there are like number of questions related to MPhil and NET both. So उनका एक तो ये है कि NET और MPhil का सिलेबस क्या डिफरेंट होता है. सेकंड क्वेश्चन इज उनका क्वेश्चन पैटर्न क्या डिफरेंट होता है, क्या हम एक साथ दोनों का तैयारी कर सकते हैं, है ना. सो ये सारा इनका बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस है मल्टीपल टाइम. तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन, अगर आप इस पे थोड़ा सा बोलेंगे. अच्छा, तो first thing is, one thing I'll tell you, see, been there, done that. I've been through that same stage. Okay, so what happens is, once you're preparing for MPhil, why not appear for NET as well and prepare? Okay, and once you're preparing for NET, why not you try and appear for MPhil also? ठीक है, अब क्या है, इतना easy नहीं है जितना मैंने बोला. ठीक है, there are certain differences between NET and MPhil. कुछ टिपिकल साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, डायग्नोसिस के, डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह के. ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल्स के. देन कम्स अ लिटिल बिट अबाउट abnormal psychology and all. Okay, majorly the difference is MPhil doesn't have any set pattern, no pattern. नेट में हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक पूरा स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. वी गेट सैम्पल पेपर्स एज पास्ट एज 10-12 years. ठीक है, MPhil का सारी प्रिपरेशन हम करवाते हैं based on the knowledge we have gathered, because we and sir and like everyone in our team is also in conversation, in connection with a lot of clinical psychology. Like all my friends are clinical psychologists. यहाँ sir मैम का भी same हाल है. ठीक है, सो क्या होता है, वी गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन, व्हाट्स लेटेस्ट इन एवरी इंस्टीट्यूट इन इंडिया, हाउ थिंग्स आर गोइंग. सर सब पैनल वगैरह में भी रहते हैं काफी, तो इस तरीके से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है. इन सब को गैदर करके वी गिव यू द बेस्ट व्हाट वी अज्यूम कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है. नाउ क्या होता है, व्हाट माय सजेशन, व्हाई आई सेड कि आपको नेट की भी तैयारी साथ में करनी क्यों चाहिए. नेट के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन नॉलेज, नंबर 2 योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. Okay, so once you start solving these questions, I'm not saying that questions are repeated, could be repeated, you never know, but you understand how much conceptual clarity you have once you start attempting the net past question papers.
ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन कॉम्प्लीमेंट योर बोथ प्रिपरेशन. आप दोनों प्रिपरेशंस को साथ में रख सकते हो. ऑफ कोर्स कुछ चीजें अलग हैं, कुछ चीजें यहाँ पे लिए डिफरेंट है. ठीक है, वो बताई जाती हैं आपको प्रिपरेशन के दौरान. बट हाँ, नेट क्वेश्चन पेपर्स आपको काम इसीलिए आएंगे क्योंकि वहां से आपको पता चलता है कि कौन से ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे आ गई है. ये क्लैरिटी आपको कहीं भी काम, लाइक द मोर यू लर्न द बेटर इट इज. ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ लर्निंग खराब नहीं है. सारी अगर भी क्वेश्चन पैटर्न अलग है, मटेरियल लाइक द बेस मटेरियल इज सेम ना, है तो साइकोलॉजी ही. ठीक है, सो दैट्स व्हाट माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स इज, वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन एंट्रेंस, it's okay, it will take some time, it will take some planning and some routine and some scheduling from your end, but if you can manage, appear for both the exams together, like side by side you can prepare for both the exams. ठीक है, पेपर वन का अलग से है, that if you guys require we can have another workshop. We have already had one or two workshops in the past months regarding paper one preparation by Rana ma'am and our team. ठीक है, तो अगर उसकी बात है तो that goes a different thing, वो अलग सेशंस में हम ले लेंगे. बट हाँ, सिमिलैरिटी इतनी नहीं है बट डिफरेंस भी इतना नहीं है. आप एक दूसरे की क्वेश्चन पेपर्स नेट एंड एमफिल का हेल्प ले सकते हो प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, We have video on paper one preparation, so that is on our YouTube channel. I'll post that. yeah, so go through the YouTube channel guys, you'll find an ample of videos for other preparations as well. Okay, so Tenzing has a question. Does internship and hands-on experience really matter for MPhil admission? See, what happens, as Tenzing has sir said, what matters is your written ka score and your interview performance. Okay, why will we select someone whose written and interview performance is low but has a lot of internship certificate? Doesn't make sense, right? So yes, focus, seekho. No one is stopping you from learning and all. Okay, you can join internship, you can learn. Okay, you can also, and make sure you're learning from where they're actually teaching you, not making you passive observers. Don't do that. ठीक है, तो बेसिक ध्यान अपना रखो प्रेपरेशन पे ज्यादा. ठीक है, और अगर इंटर्नशिप्स करनी भी है तो ध्यान रखो हु इज टीचिंग, व्हाट दे आर टीचिंग, आर दे आरसीआई ऑथराइज्ड पीपल, सही से आपको बता रहे हैं, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सुपरवाइज्ड चीजें करने को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं. ओनली देन विल यू बी एबल टू आंसर इन द इंटरव्यू, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. ठीक है, Rupa, what objective books do we need to buy for net? Rupa, books and all, there are typically books आती हैं online भी, Amazon में भी मिलती होंगी, अरिहंत वगैरह की. Because we cannot tell you, what happens here is we create our own material all the time. We keep on, modifying, rearranging and updating the material. So otherwise you can go in Amazon, filter searches and find books which are, above 4 ratings and all. वैसे करके आप search कर सकते हो. ठीक है, we basically have the base background of sample papers of the past years, and then based on that we build our own material for paper 1, paper 2, whatever. Okay, any more questions guys? The three of us are here, the three of them are here for you guys today. Okay, they've taken out time so that everyone's queries and all can be solved. I have one. Yes, sure. So the thing is, I am enrolled in a quite mediocre college for my master's in psychology. So even the syllabus is very limited. Practicals are also like, just formality. So I get confused, I get worried time and again whether, even after like I, put like least effort here and then still I get distinction in my masters. Like I've had my first year is done so far. So because of that I keep getting confused whether like even after procuring certain specified material from external sources and then doing the one that's given by my college, will it suffice to crack the entrances of RCI approved MPhil colleges? See, Varsha, even if you're saying with due respect to whatever college you're enrolled in, okay, you might feel that it's not up to the mark or something like that. We still don't know. Let's not get into the controversial questions. My advice here would be, okay, you think your syllabus is not good enough, but you in general know the major textbooks and their names like Atkinson, Morgan and King and all. आपको उनका syllabus, उनका index chapter तो पता है, वो तो आपके सामने है. ठीक है, go through them. ठीक है, यू नो द मेजर एरियाज के आपको रिसर्च एंड स्टैट्स में कुछ बेसिक चीजें कवर करनी है, फिजियोलॉजी में बेसिक चीजें कवर करनी है, सोशल साइकोलॉजी में बेसिक चीजें कवर करनी है. आपके पास एक नेट के सिलेबस का पैटर्न भी है. सो गैदर ऑल एवरीथिंग एंड देन पिक अप योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, योर वीक एरियाज. ठीक है, उस तरीके से अपना डिवाइड करो शेड्यूल कैसे करना है. ठीक है, नहीं भी है कॉलेज से इतना हेल्प, देन नेवर माइंड. ओके,
कोई जरूरत नहीं है इतना, मतलब उस हिसाब से वरीड होने की. या नंदिनी, वुड यू लाइक टू हेल्प वर्षा हियर? सी वर्षा, व्हेन वी अंडरस्टैंड ना कि कॉलेज से इतना नहीं हो पा रहा है, नहीं हेल्प मिल पा रही है, आई थिंक देन यू आर मोर इक्विप्ड टू लर्न ऑन योर ओन, बिकॉज एनीवे यू आर डूइंग दैट, सो यू हैव दैट कैपेबिलिटी. तो मैंने भी कोई बहुत ऐसे कॉलेज से नहीं किया मास्टर्स की, बहुत ही टॉप कॉलेजेस जो हैं उनसे किया है, बट आई फील जो ऐसे कॉलेज से आपको जो लग रहा है कि ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं मिल रहा, नहीं फिर भी आप कर रहे हो ना, आपको डिस्टिंक्शन मिल रही है, आपको लग सकता है कि आप बहुत कम एफर्ट कर रहे हो, बट दैट इज योर एफर्ट, सो यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ पुटिंग इन एफर्ट, राइट? प्रोबब्ली मोर देन दोज जिनको ऑलरेडी बहुत सारा सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है कॉलेज से, राइट? सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. One more The thing I only want thing to is it add. shouldn't be any open university Right. because right, it has to be regular, and you should have one clinical psychology course. You're right. No, even Deepak, if you are not from clinical MA in clinical psychology, you are from counseling or from industrial, you can apply for MPhil clinical psychology. There is no problem in that. Your degree should be equivalent to MA psychology, right? And Yes, sir, but there was only one question regarding they asked for one paper there should be of clinical psychology, like acha, the disorders or in abnormal psychology. RML, Sorry, in abnormal RML, psychology. in No, I think it's in every. no, I It's don't the think, because RCA. what RCI says is the only thing ki equivalent degree to MS psychology or equivalent degree that I have heard, because अच्छा, okay, RML में it's like open university नहीं लेते, and that is one the एक controversial subject part. एक paper हमेशा होना चाहिए इसका हाँ, वो थोड़ा abnormal कंट्रोवर्शियल है. वो psychology थोड़ा का. सा कुछ ले लेते कंट्रोवर्शियल हैं, है. कुछ नहीं लेते हैं, बट देन यार ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइक एज दीपक इज सेइंग आरएमएल नहीं लेते हैं, कुछ लेते भी हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, तो वो आप तो that is इंस्टीट्यूट the वाइज चेक कर controversial, लो right. खुद के लिए, लाइक दैट्स बेटर. राइट, वो एक कंट्रोवर्शियल वो है. एंड देन वर्षा जो पूछ रही थी, तो वर्षा का जो सवाल है उसका जवाब सिर्फ इतना है, इफ यू कैन स्कोर 55% यू कैन डू एनीथिंग. एज आई सेड, आप कहीं से भी कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, मीडियोकर है, वॉट एवर इट इज, but if you can score 55%, and so then you can do the only thing is you have to work, that is you have to study, that is the only requirement. और ऐसा नहीं है कि आप किस कॉलेज से आ रहे हैं इसका इफेक्ट आपके एंट्रेंस पे पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. इट इज आपके ऊपर है कि आप कैसा करते हैं, राइट? Yes, definitely. Yes, sir. Yes, true. Ria has another question. Any one of you will take that? Should they study in depth for all the topics thoroughly for the general psychology? That's what she's asking. Is general psychology important or in depth सारा कुछ पढ़ना है? In depth में abnormal नहीं पढ़ना होता है, but in depth में अगर नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो पढ़ने होते हैं बहुत इन डेप्थ. अदरवाइज आपको एक एपिटोमी लेके भी हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस के हैं, तो यू शुड नो अबाउट कि जैसे गार्डनर की इंटेलिजेंस है, तो उसके अंदर कितने इंटेलिजेंस आते हैं, डोमेन्स. Okay. So Tenzing has another question. Preparation strategies, like quick strategies, if you guys can share tips में क्या है, something which will they can incorporate. Well, for me it was preparing notes. You always should prepare notes. Yeah. You always should underline your always notes. And flow chart in the form of flow chart. Yeah, in the form of not flow chart. not the heavy notes, because then as I said earlier, then ultimately you are reading the book again. There is no point. You already have one book. You don't need another. One word, don't one just line copy notes बनाया मैंने हमेशा. हाँ, one line. Mainly लोग यही follow करते हैं. वो बनाई है. And as much MCQ as possible. Yeah. क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ MCQ ऐसे भी होते हैं जो आपने शायद नहीं पढ़े, but आपने जब MCQ solve किया and then you get to know the answer, और है कि वही क्वेश्चन आ गया, तो आपने वो टॉपिक नहीं भी thoroughly पढ़ा, but just because you answered, like you attempted that question, you answer, you are able to do it. So that is one thing which is very important. कृपा आप भी कंट्रीब्यूट करोगे अपनी स्ट्रैटेजी? इन द मीन टाइम दीपक, नंदिनी कुछ और बताना है तो?
Yeah, sure. So I think even like when you do the MCQs, like start preparing MCQs like the first day you just like go through the topic. Like a pre and post topic MCQ would also work, because once you do it, that's how your mind starts working. Like maybe some of you might think कि अभी तो मैंने ये chapter नहीं करा, so I don't think I can attempt the MCQ. That fear is there, but then that is the right time to actually like appear for that MCQ, because that is how your mind starts working. And when you don't like whatever questions you're not able to answer, and when you like incur those terms in the textbook when you study, so you know exactly what sort of questions are asked. So don't delay the process of MCQ. Start from day one and then prepare like a separate set of notes also. Like I had my separate set of notes which were just MCQs related, because which I couldn't answer that time. And then there were some questions which needed more clarity, which I discussed with ma'am and sir. So like what my take would be to just focus on MCQs a lot, and like from day one, apart from other things, but then don't forget MCQs. And mainly MCQs mostly cover everything, because MCQ never finishes in one question. It is or one option. Whenever there are 4 options, one is correct, then go for the 3 other options, read about them thoroughly, so that they cover the rest of the questions also. It mainly works in the net examination. You have one question that has 4 options, one option is right, then the rest 3 options have a history and everything behind it. So go through them also, read about them, what are these options for, and what questions can arise from for these options. Yeah. So as Deepak said, आपको अगर राइट आंसर पता भी है चारों ऑप्शंस में से, बाकी तीनों के बारे में जरूर पढ़िए वो क्या है, हाउ आर दे रिलेटेड, कहाँ से आए हैं वो टर्म्स, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज 3 टर्म्स इटसेल्फ, वो रिपीट ही होंगी चीजें. ठीक है, सो डू दैट एज वेल. Riya has another question. Is Indian psychology required for NIMHANS? As we said, Riya, itne der mein ki we don't have a pattern. Okay, you think you can manage time and read a little bit of Indian psychology introduction, good enough, you should do that. ठीक है, so we as a team wouldn't stop you कि ये नहीं आएगा और ये आएगा, you never know. Okay, so a little bit of basics आप कर सकते हो. And separate sessions, separate preparatory sessions NIMHANS के लिए होते हैं. You can stay updated with the website. Okay, drop in your email ID and then you'll get the updates regularly. Yeah, so far we have been teaching so many students. हमने इतने बच्चों को देखा है, हमने identify किया है, हमने tips दिए हैं, हमने इतने सारे webinars and all किए हैं. What I'll tell you in a crux is, देखो, you have to work hard. Okay, as Deepak said, दिन भर आप books लेके बैठोगे, जैसे like this is what I did. Okay, I also cracked my CIP entrance in 3 to 4 months period. What I would do is 4 to 5 hours of preparation. Okay, I would sleep very properly. I did not compromise at all on my sleep. Okay, sleep very properly. Okay, eat properly. Okay, make sure थोड़ा सा walk and all आप करो. Don't just stay glued, couch potato नहीं बनना है एक जगह बैठ के. ठीक है, also because other benefits भी होते हैं इन चीजों के. स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको. आप एक स्केड्यूल बनाओ. आपको लगता है कि महीने भर का टारगेट ज्यादा है तो, एंड डेली टारगेट बहुत कम है, ठीक है, तो मेक अ वीकली शेड्यूल बताओ, उस हिसाब से पढ़ो. गिव योरसेल्फ 1 or 2 चिल डेज इन दी होल वीक. ओके, पूरा वीक भी इतनी रेगुलरली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो. गो थ्रू एमसीक्यूज, गो थ्रू मॉक पेपर्स एंड ऑल, वो चीजें रेफर करो जस्ट, एंड कीप ऑन रेगुलरली चेकिंग योर प्रोग्रेस. most of you as students have this tendency of not keeping in check your progress. जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स ने हमारे बताया that the MCQs and all mock test and all solve करने से they got this confidence. ठीक है, they started getting this confidence and then they picked up the strength of applying and picked up this courage of facing everything. ठीक है, तो इनके वजह से आप एमसीक्यूज करो, अपने आप को टेस्ट करो, चीजें करो, एक टारगेट सेट करो. कीप 1 or 2 chill days, कीप 1 or 2 chilling activities भी बीच में. डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ मच. 4 months of preparation is enough, I guess. ठीक है, 4 to 5 months. We have 6 months packages now, so उसमें we keep some time extra, so that we can enroll you in, make you comfortable, you realize what things are going on, and then you start studying properly. Trisa ma'am, I think we have covered most of the things till now, right? There's a question, एक और question है. हाँ, there are questions we can take, and then I think you should tell little bit about us, how we
make them prepare and all those things, and हाँ, then we'll bind up, right? Whatever हाँ, हाँ, question we'll take first, and then we'll do that. ठीक है. So as sir said, what happens really when you get enrolled with us, what benefits you get and what you like, how you can make the most of it is you get live classes, you get the same classes like post COVID. We'll just start with the offline as well. पहले हम offline and online simultaneously करते थे. So before the week starts, you get a schedule of the classes. कैसे होगा, क्या आपको कितने टाइम आप occupied रहोगे, ठीक है. एंड देन वीकली स्केड्यूल मिलता है आपको. हर यूनिट का एक प्री मॉक टेस्ट मिलता है. आफ्टर द यूनिट फिनिशेस यू गेट अ पोस्ट मॉक टेस्ट, ओके, पोस्ट सैंपल टेस्ट, जस्ट टू सी हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू हैव मेड, ठीक है. देन वी हैव डाउट सेशंस एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग एंड ऑल, वो साइमल्टेनियसली चलता है. यू गेट रिकॉर्डेड क्लासेस. In case you missed out a class, you can go back and refer to any of the classes. And even when if you have attended the class, you want to go back, आपको फिर से सुनना है उस theory का, कुछ clarify करना है, you get you get enrolled through UIBS to certain resources, जिसके through आप recordings access कर सकते हो. Then you get a ebook resource link. You get a ebook library through UIBS. You can access and download any of the books you like. Okay, you get notes. These notes are very well prepared. Why I would say is we keep on updating them regularly. जैसे भी ये बच्चे हमारे ये बच्चे हैं और भी बच्चे हैं जो हमें बहुत सारा feedback देते हैं कि ये questions आए थे, ये questions ऐसे आए थे. So likewise we keep on modifying these notes. ठीक है, so that you keep on getting every now and then. Then you're also added to a WhatsApp group. So what happens once you're added to a group? There's a lot of discussion of MCQs and all going on. ठीक है. So anytime I open the group, there are like 500 to 300 messages there. Okay, तो वहाँ पे क्या होता है, students are discussing, you can contribute, we contribute with answers, we give them reference articles and all to read. So it's all a very active process. So this is all given to you for a 6 months period. You can make the most of it. And pre-COVID तो हम ये भी करते थे, students would also come and read there. They would come 1-2 hours, 3 hours early class time, so they would sit there, read there, because they would also sometimes want that atmosphere. For online, for outstation students out of Delhi, there's no problem. हम simultaneously वो class live करते हैं, ठीक है. Simultaneously the screen is on. It's your questions are taken. Your questions are also addressed to the other students. They can hear you. You can hear the other students who are physically present. So it's as lively we can make it there. ठीक है. Any more questions you have from us? How do we do it? कैसे करते हैं? You can also go for free demo classes. We do arrange free demo classes. Ma'am, is there 1 month coaching for MPhil entrance, or how much? 1 month and all we typically do for premier institutes like NIMHANS and all. Otherwise, there's a regular course for 6 months. ठीक है. निम्हांस CIP वगैरह आ रहा है तब, या इभास आ रहा है, then we do a like a crash course type of a thing, where we try to accommodate as much as possible, typically tailoring to the needs of the students. Otherwise, the 6 months course is there, which you can join any time. ठीक है. जिस भी time आप join करोगे, उसका आपका जो भी whatever you have left or whatever you couldn't attend will be repeated in the 6 month cycle. That is repeated. ठीक है. So you don't have to worry that if you're joined in certain mid of September, what happens? What about the things which were covered before September? Okay, so you don't have to worry about that. That is automatically renewed for you. You get it. Okay, that's great. Thank you. And another thing is, if you're working or you have other responsibilities, then you can go for the recordings also, that we call e-learning. So in that you will get all the recording of the same classes, and that you can access at any point of time, like morning, evening, whenever you have time. Okay. Thank you. Sir, there's a question they're asking if we are doing a crash course for NIMHANS this month. Trisa ma'am, till now we have not because in any ways there are a lot of syllabus, so it is sometimes it is difficult to cover all those things. Definitely you can go for our recording classes and reading material and mock test, that you can cover at your speed, so that can be done. Hello. Yeah, just going multiple books, is it really manageable without going for coaching? See, Tenzing, it's totally your call. है ना? It's where you stand as a psychology student, postmasters. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है where are you standing, how much you need to cover. ठीक है, there is no hard and fast rule लेना ही है. ठीक है, you have to decide it for yourself. ठीक है, that's a totally personal call to be taken.
आप देखो कहाँ स्टैंड करते हो, कैसे एरियाज आपके वीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है, कितनी सेल्फ रीडिंग से आती है. मेनी पीपल डू इट बाय सेल्फ रीडिंग. ठीक है, सो इस तरीके से यू हैव टू टेक दिस कॉल. Akansha Upadhyay, thus going multiple books for a single area is essential. See, make a जैसे आप एक यूनिट उठाया आपने पर्सनालिटी या मेमोरी या लर्निंग, उसमें अंडरलाइंग टॉपिक्स क्या है पहले वो आइडेंटिफाई कर लो. Then look for a book which covers all these topics. And as these students told you, एक बेसिक बुक रखो, इतनी ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, एक या दो बेसिक बुक्स रखो, that's enough. I think Trisa ma'am, we have covered all the questions, and Kripa and Deepak, they are also there from long time now, more than 1.5 years. So I think we have covered all the things, and whatever remaining you can tell, and then we will wind up. Like I don't think ठीक है, we should extend more, right? हाँ, जो भी queries हैं आपकी, आप website visit कर लीजिए. ठीक है, lot of things will be answered there. You can drop in your messages there. ठीक है, we usually reach the very moment during the working hours. Otherwise next day you will definitely be answered. You can drop in your email IDs. आपको regular updates भी मिल जाएंगी चीजों के. We conduct a lot of workshops, webinars and everything very regularly. Okay, so you can be updated. Follow us on Instagram and Facebook. You can be very much thorough with whatever is going on. Rest, I would definitely like to thank Kripa, Deepak and Nandini. I definitely, and sir and I would definitely understand how difficult it is during MPhil to take out time. Right. So they have taken out time for us, and we are very, very proud of them, the way they are doing right now, the way they have, gained a position there. We are very, very proud of them. Thank you so much. And thank you to the rest of the participants who attended the webinar. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for conducting this useful webinar. Actually, this is the need of the hour. Thank you. Thank you, everyone. Okay. Thank you. Okay, thank you, everyone. Thank you, Trisa ma'am, and thank you, Deepak, Kripa, and Nandini for joining us. And best of luck to everyone, right? Yes, all the best, everyone. Thank you. We can log out. Thank you. Thank you so much. All the best, everyone.